We are doing matter and its composition. So I told you some homework, so you did, Nashta? Yes, ma'am, you have the meanings. Matter and its. So we were studying Change in state of matter. change of matter. तो पहले आप बताओ, सबसे पहले जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो मेल्टिंग, राइट? Yes. सॉलिड के में अगर मेल्टिंग होगी तो इट विल चेंज इट टू लिक्विड. So what do you understand by melting? Ma'am, melting is a process where solids are in high temperature from their normal temperature, which causes a change in state, which is from solid to liquid. Correct. Any example of this? Ma'am, ice melting to water. Yes, well, very good. So now when liquid changes to solid, so it's done by freezing. Freezing. So freezing is Freezing, also known as solidification, is when liquids enter a colder temperature from their normal temperature, which causes a change in state of matter, which is from liquid to solid. yes. And what's the example? Example is water turning to ice. Yes. Forming of ice from water. Yes, ma'am. Next is condensation. So what do you understand by condensation? Condensation is a process where gases are in a colder temperature from their normal temperature, which causes them to change from gas to liquids. Yes. And example? Example, water vapor turning to water droplets. Water droplets. Okay. Evaporation. Evaporation is a process wherein liquids are in a warmer temperature than the normal temperature, which causes them to become gas from liquids. Yes. Example is water Liquid. vapor. Yes. Liquid changes to gaseous state below its boiling point. And example, what you are telling? Water vapor. Water vapor. Okay, so when an open container filled with water is kept under the sun, it dries out after some time, right? So it's because of evaporation. So now last is sublimation. Yes, ma'am. Sublimation is a process wherein solids are in a colder water temperature, which causes them to melt in gases and not passing through the state of liquid. Liquid phase. Yes. And the example, Camphor. camphor. Very good. So you did the homework nice. Thank you, ma'am. So now the last topic of this chapter is, so I'm not making you write all the definitions because you told me right. Okay, so there is no change in the definition. So now last topic is effect of temperature on the fates matter. So now I'm making the diagram. So there is in solid, all the atoms are closely packed, right? Yes, ma'am. There is
less space, so this is solid. ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, further cooling results in strengthening of intermolecular force of attraction. ठीक है, तो वही सेम है यहाँ पे. ठीक है, सेम. ओके मैम. और हीटिंग में क्या होता है, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में हीट करेंगे और लिक्विड को गैस में, तो हीटिंग रिजल्ट्स इन वीकनिंग ऑफ. ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीकन हो जाएगी. ओके मैम. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो सेम हैपेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑल्सो. इसमें भी वीकन हो जाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हीटिंग पे. इसके बाद मैम सेकंड मैम. intermolecular force increases the intermolecular space decreases. ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज होगा. ठीक है, ओके मैम. और इसमें भी सेम. और हीटिंग में क्या होता है, हीटिंग में इसके ऑपोजिट होता है. तो एज intermolecular force decreases, तो क्या होगा, the intermolecular spaces increases. ये भी सेम इसमें होता है. तो अब तुम देख रहे हो ये, चलो तुम ये डायग्राम बना लो. डन मैम. तो इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमारे तीन सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. गैस में हमारे ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है कि जैसे हम गैसेस से लिक्विड में हीट करेंगे, जब उसको हीट करेंगे तो क्या होता है, कूलिंग जो होगी वो क्या रिजल्ट करेगी, इसको कूल करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगी, वो अच्छी होगी. और जो हीटिंग के टाइम पे, हीटिंग में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, वो वीकन होगी.
जैसे ही हम चेंज करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होता है कूलिंग पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेस, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीजेस। और हीटिंग पे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इंक्रीज होती है, ठीक है। ओके मैम। ओके, एक बार ये अच्छे से समझना क्योंकि अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी हम इसकी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ओके मैम। क्योंकि ये इसका लास्ट टॉपिक था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मैटर। तो मैटर क्या होता है अनुष्का? Matter is anything which has mass and space and has volume. मास एंड स्पेस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इसको हम मैटर कहते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वेरी गुड, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? Ma'am? What is the difference between mass and weight? Ma'am, weight is depends on gravity, while mass doesn't depend on gravity. Right. Mass is Mass, something thing. mass क्या होता है? Nashta, which the points which you want to note it down, so तुम उसको लिखते रहो, ठीक है। जो तुमको नहीं पता है तुम्हें लिखना हो तो लिखते रहो। क्वांटिटी ऑफ मैटर। और वेट क्या होता है? वेट इज the force with which the earth pulls a body itself. तो क्या हम कहते हैं, the mass of the body does not change, but weight changes from place to place, right? Mass remains same. So mass वेट जो होता है वो चेंज होता रहता है। Yes, Nusha, question number 3 पर चले, लिख लिया है? हाँ मैम, लिख लिया। ये समझ आया मास और वेट का? Yes ma'am, mass doesn't change while weight does because it depends on gravity. तो इसलिए हम बोलते, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने
डिस्कस करने वाली थी, फिर मैंने क्वेश्चन देखा तो आई थॉट कि इसी क्वेश्चन में if an object weighs 6 Newton on Earth, what will be its weight will change mass? अब मून पे जब जाते हैं, हम मून पर होते हैं, तो क्या डिफरेंस आता है हमारे मास और वेट में? अब क्या होता है इसमें, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो पता है कि वेट ऑफ बॉडी ऑन is equal to 1/6 of its weight अर्थ। जो अर्थ पे हमारा वेट होता है, मून पे जाके वो 1/6 हो जाता है, राइट? 1/6 हो जाता मून पे जाके। हाँ, It will become 1/6 of its weight. 6 of its weight. So body will weigh 1/6 of 6। ओके, हमें 6 न्यूटन दिया हुआ है, राइट, उस ऑब्जेक्ट का। तो 1/6 into 6, तो 6 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ, 1 न्यूटन ऑन, हमने क्या वेट निकाला है कि एक ऑब्जेक्ट का 6 न्यूटन ऑन अर्थ था, तो उसका वेट मून पे क्या होगा, तो मून पे उसका क्या होगा, 1, राइट? Yes, ma'am. 1/6 से 6 कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ अ बॉडी Will not change. does not change with change in gravity. One second, ma'am, I'm writing. Yes, so that's what I'm asking you for. Done, ma'am. The mass of a body does not change with a change in gravity. You are saying something, Anushka? No, ma'am. So
mass of a body will remain the same on ये कंप्लीट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसका कंप्लीट कर लिया थर्ड क्वेश्चन. हाँ मैम. ओके, जो फोर्थ क्वेश्चन है, you have to write your observation and conclusion for the following. So first है कि when few marbles are put in a glass half filled with water. अगर एक ग्लास half filled with water है, half fill हुआ है water What से. will happen? हाँ, so what will happen? What's your observation? और सेकेंड है ice is kept at temperature. तो फर्स्ट वाले ये फर्स्ट रिकॉर्ड मुझे बताओ कि क्या ऑब्जर्व करोगे आप. After that I should write? Yes. No, you write it down or let me know after this that what's your observation conclusion. Okay ma'am. दीदी का क्लास होने का, क्लास के बाद आपको देते बेटा. Yes, Navasha, लिख लिया. Yes ma'am, I wrote the first one. The Okay, marbles first go yes. down as they are heavier and denser than water, which will increase the water level to take for the marbles to take place in glass. Okay, right. वाटर लेवल अबव हो जाएगा पहले से, क्योंकि जो मार्बल्स हैं Sorry ma'am. Yes ma'am, you can continue. Sorry. टेम्परेचर पे रखते हैं तो क्या हो जाता है. Yes, Navishka, can you tell what will happen when ice is kept at room temperature? No ma'am, I have to write that. I wrote the first one. Okay. Write it down and tell me कि क्या होता है जब हम आइस को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं. Okay ma'am. Done ma'am. Okay, तो इसका आंसर क्या होगा? Navishka, what's your You observation? won't find the ice as it will be replaced by water during the melting process, as it is in a warmer temperature causing it to melt. Okay, so next question is characteristics of matter. ये हमने डिस्कस किए थे characteristics, right? Yes ma'am, they have discussed. दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे. Ma'am? Yes, Navishka, you can hear me now. Yes ma'am, now I Yes. can hear you. Navishka, now right, this question is for homework. Okay ma'am. You have to differentiate
an atom and a molecule. So you have to write the difference between them. Ma'am, I have many differences as we can. What? Many differences. How many differences that we can find? What? That How many? I mean, how much you know? So you write it down. Okay, ma'am. Okay. So this is for homework. And this second question, this question number 7 is also for homework. Because you know all this, so I'm not discussing it. You have to define solid, liquid, and gas with example. So that's why I'm not discussing these questions क्योंकि आपको पता है. Okay, ma'am. Gas with example. ये दो क्वेश्चन है अभी होमवर्क में. क्वेश्चन नंबर ये तुम लिख लो, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखती हूँ, उसको हम यहीं डिस्कस करेंगे. Ma'am, this I have to write now. This question number 8 Yes, ma'am. we are discussing. So leaving these two questions are for homework. Now we are continuing with the discussion. Okay, ma'am. So why are liquid and gases called as fluids? Fluids. ये हम इनको fluids क्यों कहते हैं? Ma'am, because they can flow and are not stable as Yeah. solids. Because the particles are free to move in any direction, right? They can flow One because second, ma'am, let me write. the particles are The particles of liquids and gases done, ma'am. question. नविक्षा एक बात बताओ, ये for Yes, 1 ma'am. week from tomorrow, for 1 week, can you take class from 4 to 5? 4 to 5 Ma'am, you can नहीं, ask my father about it. नहीं 4 to 5 मैं कर नहीं सकती. Ma'am, you can ask my ठीक father है about ठीक है, it. मैं पापा को बता दूंगी. Okay, ma'am. क्वेश्चन वो तुमने कंप्लीट कर लिया ना? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इंटर conversion of states
interconversion of states of matter. इंटरकन्वर्जन क्या होगा कि एक स्टेट में चेंज होना और फिर वापस से उसी स्टेट में आ जाना. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस बाय विच मैटर changes from one state to another and back original state without any change in its chemical तो इसको हम बोलते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. One second, ma'am. Let me write one. कंप्लीट कर दो, मुझे बता दो, तब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. Okay, ma'am. Yes, Navishka, completed. Yes, ma'am. Completed. तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do solids, liquids and gases differ in their physical state? इसमें जो फिजिकल स्टेट में डिफरेंस होता है तीनों में, वो क्यों, किस वजह से होता है? तो एनी गेसेस? Why there is a difference in why there is a difference due to physical state? Yes, Navishka? Yes, ma'am. Why?
Can you shift before that? I need to see the question again. Mom, Yes. can Okay. you Should I? repeat? Yeah. Just Why do solids and liquids and gases differ in physical state? Ma'am, because of the change in intermolecular force and intermolecular space. correct. Because intermolecular force of attraction, the intermolecular spaces, these are two important properties of matter that account for the different states of matter, right? Very good answer. Next question is, under what conditions do solids, liquids, and gases change their state? So, under what conditions they change their state? Okay. Can you tell what are the conditions? Under what condition do solid liquids and gases change the state? Ma'am, heating and cooling. Matter can change from one state to another on changing temperature and pressure. Okay, both the things, temperature, changing temperature and pressure. Now our last question. You have to give reasons. First I'm writing when a stone is dipped in a glass containing some water, the level of water rises when a spoon of sugar is added to it and stirred. The water level does not rise. बाबू 5 मिनट Yes, Navishta? Yes, ma'am. Yes. ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो आप मेरे को. That what did you understand by this question? Ma'am, here the stone and the sugar 15, that I have to say the difference, right? Yes. First of all, you have to tell that if stone is dipped in a glass containing some water, why the level of water rise, and why
the level does not rise in case a spoon of sugar is added to the water and stirred. So why it increases in case of stone and why it does not rise in case of sugar? Sir, are you writing something? No, ma'am. Then tell me. Here, ma'am, just when a stone is dipped in a glass of water, the level of water rises because the stone can't be dissolved in water. But when a sugar is stirred in water, the water doesn't rise because it is dissolved in the water. Right, because जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉलर होते हैं और वो एडजस्ट हो जाते हैं बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स. तो इसलिए वो शो करता है कि दिस शोज दैट देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन वाटर. ठीक है. Okay, ma'am. हाँ, चलो. शुड आई टर्न द पेज? लास्ट क्वेश्चन करें. Okay, ma'am. So the last Ma'am, question is, after that, my father wants to talk to you. yes, Okay, ma'am. a drop of ink added to water in a glass turns the. क्या होता है कि अगर हम एक ड्रॉप डालते हैं पानी में इंक की तो वो पूरा पानी ब्लू कलर का हो जाता है, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? एनी आइडिया हर्षा? No, ma'am. ओके. तो मेरे को रिप्लाई तो करो, तो मैं पूछती हूँ तो आप बोलते हो, बता दिया करो I क्या. tried to think first, right? हाँ, I was trying to think. ओके, यू आर थिंकिंग. ओके, so this is because जो water होता है as well as the ink particles, they are in continuous random motion. So due to motion, the blue color particles of the ink spread all over and gives blue color. So this is because of the random motion of ink and water particles. So Navishra, this chapter is completed. So tomorrow we'll have the test of integers. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम इसका टेस्ट कब करेंगे और हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे. Okay, ma'am. Ma'am, can my father talk to you? Yes, yes, please. Madam,